Hello guys, I am Bhaur again with one more video for you. The pattern will be the similar. The first phase will be in English and the second phase will be in Urdu. So today I am going to discuss a few things about pellets and slugs. First of all, I understand that we all know what is the difference between pellet and slug. Please focus here. This is the pellet and this is the slug. Now you can understand well that the pellet is very much of the shape of badminton shuttlecock. If we have all played badminton, so we know what is the shape of badminton shuttlecock, right? Okay. Now please, this is the shape badminton shuttlecock. Okay. While the slug is the shape of the bullet, the top end of the bullet that leaves the cartridge and moves into the air through the barrel. The shape of the slug is just like that, just like the bullet. So now comes the next phase that after defining these two things. We can see that when we play badminton, the shuttle remains, it keeps its way, it keeps its trajectory. If it is not in that shape, I want to tell you that there are, in fact, to keep something on the proper trajectory, there are two principles, two phenomena. One is spin rotated and spin we can spin stabilized, and the other is fin stabilized. So the shuttlecock is fin stabilized. Similarly, the skirt of the pellet is the fin of the pellet, right? This acts like the shuttlecock and this acts as the fin. So pellets are mostly fin stabilized. Okay. Now what happens? Just like the badminton shuttlecock, when we play with it, we hit the racket on it, it goes straight. The on the head there is more weight on the head, and there is a fin type shape on the skirt. So the head keeps the way forward and it goes on the straight path. So this is the basic phenomena of keeping the shuttlecock as well as pellet on a certain trajectory, on a straight trajectory. So what we understand from it, we understand that even if there are no grooves, because in shuttle, when we play badminton, there are no grooves. The shuttle goes almost straight without twists. So even if there are no grooves in the barrel, our pellet can go straight, quite straight, right? So in contrast to our pellets, what happens with the slugs? Slugs are not fin stabilized. It is just a piece of metal that is just we can say aerodynamically shaped and nothing else, right? So there is no fin in it. Now how will it keep its trajectory straight? The answer is that it is the rotation stabilized, it is spin stabilized. Now for slugs, if you are aware of the firearms also, you would know that there are a lot of firearms and there are a lot of twist rates available in the firearms, even 7 inches twist rate, even 12 inches twist rate, 10 inches twist rate, or 14 inches. That is very common in firearms. While when we go into the air guns, we normally say for pellet guns, the twist rates are normally 17 or above. Normally for .22 there are 17 or above. That means that in 17 inches a pellet completes its one rotation, right? So in fact, what happens with the pellet? In fact, as we all know that all barrels today are grooved barrels. So what happens? The phenomena in the case of the pellet is combined. It is fin rotated as well as it is rotation or spin rotated. So the grooves of the barrel imparts a spin on the pellet, and the skirt also stabilizes it. That is the reason the pellet is normally not required that much spin, because its spin helps it to keep straight path. So if I just mention here FX smooth twist barrels,
only the front part of which was twisted a bit. So even if that twisted was 17:1 or whatever about that, what was the phenomena, what was happening? The pellet traveled from the muzzle all the way to those twists, and from those twists, even that if even if that rate was 17, when it moved through those twists, those are an inch or a bit more. So when it left the muzzle, due to the excessive FPS, excessive velocity, the pellet did not take all the effect of those twists. So pellet used to skid from those twists. My friend Harry and some other, and I think Mr. Frederick has also tested it, that effectively when in smooth to barrel, when the pellet leaves the muzzle, the effective twist rate of that pellet is approximately 60 to 65, while the twist rate of the barrel is around 17. The effective rate becomes 60. Even then, in the smooth twist barrels were very accurate. It were as accurate, I mean, as it can be, but with GSB pellets. Specifically, those were built around GSB pellets. So here we conclude that pellet does not require that much twist to be stabilized, right? There were some other issues with those smooth twist barrels. In fact, those were not for a variety of pellets and things like that. Okay, that is a separate issue. We will discuss the barrels in a separate video. Now we come to the slugs. What happens slugs is there is no fin stabilization. So if you use the slugs in the smooth twist barrel, what will happen? It will not get that stability through the spin, and it has not the fins, so the result is no good there. So normally for pellets, what we need, you would have seen that the manufacturer what have offer for pellet for these slugs, they offer normally 1:16 ratio twist rate. While we increase the twist rate, I mean 1:16 is more twist rate. It is not less twist rate, right? I will call it like this because it means that in 16 inches it completes one circle, one rotation. So it is more. And 19 twist rates means that in 19 inches it completes one rotation. So that is less. So with slugs, as it is stabilized only due to the spin, we need more twist in the barrel. So we normally see that for slugs there is almost 16 or even less twist rate. But then there are some other features. But slug requires a good, I mean, slug does not want to be skid through the barrel. It wants to take all the effect of the internal twist rate of the barrel. So it can be that the barrel is 17 twist rate, but what is happening that pellet is skidding from the barrel, and effectively the twist rate is not that good. But on the other hand, a barrel is 19 twist rate, but that is made, the internal profile of the barrel of that barrel is such that when the slug is shot from that barrel keeps the slug from skidding. So the slug takes a more quicker twist rate, so it becomes stabilized. So we have a conception that there are some barrels which even are of high twist rate, but those barrels don't accurately shoot the slugs, and some barrels are low twist rate but they shoot accurately. So there are many other phenomena. The internal profile of the barrel, the choke, and all those things are very important. The lands, grooves, how the slug is gripped into the barrel. So these are all the things which we have to take care of. Then there comes the next step. We all know that in pellet, what happens, only two surfaces, only this edge of the skirt and this head of the skirt, or this dia of the head, only these two bearing surfaces come into contact with the grooves, right? So this is a very tiny area, while on the other hand
in case of slug, this whole portion, this whole length come into contact with the grooves. So this is much more area that comes into contact with grooves. So this is one more difference. So this difference also changes the whole story. Okay, now we have discussed this. Yes, now due to these things, but what happens when we shoot a pellet against the high thrust of air, the skirt it expands. Like that when the high thrust of air is put on the skirt, it expands and adjusts itself according to the grooves, right? So normally it is easier for the pellets to become accurate. It makes itself, it adapts itself according to the grooves of the barrel. But on the other hand, in case of slug, when the hit of the air, high pressure air comes and hit the backside of the slug, there is nothing that will flare up, that is nothing which will expand and grip the barrel, the grooves of the barrel. So here we are, I mean, we have to be very careful that pellets are very much forgiving in our selection, in our FPS, in barrel profile, but pellets are very forgiving, but slugs are not that forgiving. For obtaining the accuracy of the slugs, we have to be very precise in everything. In which things we have to be precise? We have to be precise in the internal profile of the barrel, in the choke of the barrel, in the precision dia of the barrel, in the outer dia of the slugs. It is also available in 0.216, in 0.217, in 0.218, and some companies are making these slugs in between, right? So we have to find the best match with the barrel. And then the FPS, we all know that FPS are very important for the accuracy. So we need all these things. Okay, so these are the main things which I wanted to share with you in this short video, because many people are saying why pellets are accurate, why slugs are not accurate, why yes, one thing that the BC of the slugs is very high. Normally the BC is very high. BC is the ballistic coefficient, and the meaning of its being high, it means that it will not drop so quickly. The pellet will drop, if the pellet drops 2 inches at 50 yards, maybe the slug will drop 1 inch or even less at 50 yards. And similarly, as we move forward, the drop of the slug is much lesser. Similarly, the effect of air, the effect of wind is much lesser on the slug as compared to the pellet, right? But the core issue is that finding the optimum accuracy with the slug, that is a challenge. That is normally difficult, much difficult as compared to pellets. There is one more thing, that due to this dual capability of the pellet of being stabilized through its fin and through rotation, if we shoot the pellet in indoor, for say for 100 yards there is controlled environment, and if you shoot the pellet, you can make it more accurate as compared to slug. Sometimes we find that slug is more accurate in open environment. The reason being that because of the BC, the wind does not affect the slug so much. But if you use both things, slug and pellet, in controlled environment, you will find you can get better results with the pellet. Thank you. दो में बात करते हैं। अच्छा भाइयों, बेसिकली मैं आज थोड़ा सा ये डिस्कस करना चाह रहा था कि पैलेट और स्लग में क्या फ़र्क है। देखिए, हम सब जानते हैं कि जो छर्रा है, पैलेट जो है, ये होता है बिल्कुल शटल कॉक की तरह। जैसे हम चिड़ी छिक्का खेलते हैं, बैडमिंटन खेलते हैं, तो उसमें हमारा जो वो बैडमिंटन की शटल होती है वो इस शेप की होती है, ठीक है। उसके जो पर होते हैं उनके ये शेप होती है। ये शेप डिफरेंट है, स्लग की शेप डिफरेंट होती है, ठीक है। अच्छा, अब जब हम बैडमिंटन खेलते हैं
तो आप सबको पता है कि हम जब मारते हैं उसे रैकेट से तो वो शटल सीधी जाती है, हालांकि उसमें कोई रोटेशन नहीं होती, कुछ नहीं होती, सीधी जाती है। इसकी वजह ये है कि ये स्टेबलाइज हो रहा होता है फिन से। चीज़ों को, किसी भी प्रोजेक्टाइल को स्टेबलाइज करने के लिए, सीधा भेजने के लिए दो तरीके हैं। एक तरीका है कि फिन स्टेबलाइजेशन, जिसका मतलब है कि उसके पर इस तरह के बनाए जाएं जो उसको सीधा रखें, ठीक है। जैसे हम डॉट गेम खेलते हैं, उसके पीछे उसके पर होते हैं लाइट वेट के, वज़न आगे होता है। इसी तरह छर्रे में वज़न आगे है और पीछे ये स्कर्ट जो है इसकी, ये पर की तरह है, ठीक है। तो ये इसको स्टेबलाइज्ड रखता है। अच्छा, अब बात ये है कि लेकिन फिर हम बैरल में ग्रूव क्यों डालते हैं, ठीक है। ये काफ़ी लेट इस चीज़ सामने आई थी कि पैलेट जो है ये दो तरह से स्टेबलाइज हो रहा होता है। ये बेसिकली अपने फिन से भी स्टेबलाइज हो रहा होता है और रोटेशन से, ग्रूव से भी स्टेबलाइज हो रहा होता है। ये कॉम्बिनेशन है दोनों, इसकी एक्यूरेसी जो है, इसकी स्टेबलाइजेशन जो है, इन दोनों फैक्टर्स का कॉम्बिनेशन है। जबकि स्लग जो है, क्योंकि उसमें कोई फिन नहीं होता, कोई पैर नहीं होते, उसमें कोई स्कर्ट नहीं होती, तो स्लग ने सिर्फ और सिर्फ रोटेशन से, स्पिन से स्टेबलाइज होना होता है। अच्छा, यही वजह है कि स्लग को एक्यूरेटली जब मारना होता है तो उसके लिए हमें ज़्यादा ट्विस्ट रेट की ज़रूरत होती है। ज़्यादा ट्विस्ट रेट से मतलब ये है कि अगर एक, मतलब 1/14 ज़्यादा ट्विस्ट रेट है, 1/19 कम ट्विस्ट रेट है। 1/14 का ये मतलब है कि 14 इंच के अंदर छर्रा एक रोटेशन पूरी कर लेगा, एक चक्कर पूरा कर लेगा, और 19 का मतलब ये है कि 19 इंच के अंदर वो एक रोटेशन पूरी करेगा, ठीक है। तो जितनी जल्दी वो रोटेशन पूरी करेगा वो हाई ट्विस्ट रेट कहलाता है। तो इसलिए छर्रे ने ये स्लग ने क्योंकि सिर्फ और सिर्फ रोटेशन से, अपने स्पिन से स्टेबलाइज होना होता है, तो हमें आमतौर पे इसके आरपीएम को ज़्यादा रखने के लिए इसकी वेलोसिटी भी ज़्यादा रखनी पड़ती है और आमतौर पे बैरल का ट्विस्ट रेट भी ज़्यादा रखना पड़ता है ताकि ये खुद ब खुद एक्यूरेट रहे, क्योंकि इसके पीछे फिन्स नहीं है, किसी चीज़ ने इसको स्टेबलाइज नहीं रखना सवाए इसकी रोटेशन के। तो एक तो ये चीज़ आपके सामने रखनी थी कि एक ये चीज़ है। अच्छा, लेकिन इसके साथ साथ कुछ चीज़ें और भी हैं। अच्छा, एक चीज़ ये है कि छर्रा जो है ये सिर्फ हेड टच करता है इसका, और स्कर्ट टच करती है बैरल पे। सिर्फ ये हेड और सिर्फ ये स्कर्ट टच करती है, और बहुत से छर्रे ऐसे होते हैं जिनका हेड भी टच नहीं करता, सिर्फ स्कर्ट टच कर रही होती है। फिर दूसरी बात यह है कि स्कर्ट जो है, जब एयर का पफ इसे मिलता है तो स्कर्ट एक्सपैंड करती है, ठीक है। इसकी नेचर ऐसी है स्कर्ट की, एक्सपैंड करती है और ग्रूव्स के साथ चिपक के आगे जाती है, तो 100% सीलिंग भी होती है, ठीक है, और ये इस तरह से आगे बढ़ता है। जबकि स्लग में क्योंकि नॉर्मली स्कर्ट नहीं होती, तो इसमें वो एक्सपेंशन वाला फैक्टर आता नहीं है इसकी स्कर्ट में। स्कर्ट है ही नहीं तो एक्सपैंड क्या होगा, ठीक है। इस वजह से आमतौर पे हमें स्लग को चूज़ करते वक्त बहुत एहतियात से चूज़ करना पड़ता है। हर किस्म का स्लग नहीं चलता, यानी मतलब मेरा कहने का ये है कि पैलेट तो हो सकता है कि मुख्तलिफ वेलोसिटीज़ पे चल जाए, या कोई भी पैलेट काफ़ी एक्यूरेटली चल जाए, लेकिन स्लग को एक्यूरेटली चलाने के लिए, क्योंकि स्लग का ज़्यादा सरफेस एरिया कॉन्टैक्ट में भी आता है, ठीक है, और स्लग के स्कर्ट ने वो एक्सपेंड भी नहीं होना होता, तो हमें बहुत एक्यूरेट डाई का स्लग चाहिए होता है और उसके लिए बड़ी परफेक्ट बैरल चाहिए होती है, और उसका ट्विस्ट रेट और एफपीएस हर चीज़, यानी ये कॉम्बिनेशन हमें जितना प्रिसाइज स्लग में चाहिए होता है, आमतौर पे पैलेट में उतना प्रिसीजन की ज़रूरत नहीं है, और फिर भी हम एक्यूरेसी अच्छी ले लेते हैं। तो एक ये कुछ चीज़ें आपसे डिस्कस करनी थी, आपसे शेयर करनी थी, ठीक है। अच्छा, फिर एक चीज़ और है कि बैरल के अंदर, अब ये तो हमने कर ली ट्विस्ट रेट की बात, लेकिन आप कुछ ऐसी बैरल्स भी देखेंगे जिनका ट्विस्ट रेट तो 1/19 है या 1/20 है, लेकिन वो स्लग को अच्छा चला रही हैं, और बाद ऐसी हैं जिनका 1/14 है लेकिन वो स्लग को अच्छा नहीं चला रही। अब इसके अंदर बैरल के इंटरनल प्रोफाइल की भी बात है कि बैरल जो है वो स्लग को कितना अच्छा पकड़ के आगे लेके जा रही है, स्लग उसमें कितना गुड फिट है, और कितना जब वो निकलता है तो इफेक्टिव ट्विस्ट रेट कितना होता है उसका। ऐसा हो सकता है कि एक 20 ट्विस्ट रेट की बैरल हो और वो स्लग को इतना अच्छा आगे लेके जा रही हो कि वो निकलने के बाद भी उसमें स्किड ना करता हो, बल्कि निकलने के बाद भी उसका ट्विस्ट रेट बरकरार रहता हो। और ये भी हो सकता है कि एक 16 ट्विस्ट रेट की बैरल हो, लेकिन उसका प्रोफाइल इस तरह का हो कि वो स्लग निकलने के बाद उतने हाई आरपीएम पे ना जाए। तो ये इंटरनल प्रोफाइल से रिलेटेड चीज़ें हैं। इसमें मुझे एक चीज़ याद आई कि एफएक्स की जो स्मूथ ट्विस्ट बैरल होती थी, जिसका आगे सिर्फ थोड़ा सा हिस्सा ट्विस्टेड होता था, वो हिस्सा शायद 1/17 के ट्विस्ट रेट का होता था, लेकिन ये हमारे दोस्त हैरी ने और फ्रेडरिक ने खुद भी शायद चेक किया था कि जब छर्रा उसमें से निकलता था 8.22 का,
तो निकलने के बाद क्योंकि वो स्किड करके करता हुआ निकलता था, पूरा उसका इफेक्ट नहीं लेता था उसके ग्रूव्स का घूमने के लिए। तो जब वो मजल से निकलता था तो निकलने के बाद उसका इफेक्टिव ट्विस्ट रेट एयर में जो था वो तकरीबन 1/60 का था। तो इतने कम ट्विस्ट रेट के साथ भी वो बैरल बहुत एक्यूरेट थी। तो मकसद ये है कि एक्यूरेसी, पैलेट की एक्यूरेसी के लिए हमें बहुत ज़्यादा ट्विस्ट रेट नहीं चाहिए होता। हम बहुत कम ट्विस्ट रेट के साथ पैलेट की एक्यूरेसी हासिल कर सकते हैं, क्योंकि पैलेट को उसका फिन जो है, उसकी जो स्कर्ट है वो भी स्टेबलाइज कर रही होती है। ठीक है जी, तो ये है। अच्छा, ये सारी वो चीज़ें हैं जो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा था, क्योंकि लोग बहुत से कहते हैं कि यार स्लग नहीं अच्छा चल रहा, स्लग में प्रॉब्लम है। ठीक है, लेकिन स्लग के बहुत से फ़ायदे भी हैं। स्लग का बीसी अच्छा है। बैलिस्टिक कोफिशिएंट का मतलब ये है कि उतनी जल्दी ड्रॉप नहीं करेगा। अगर पैलेट 50 यार्ड्स पे फ़र्ज़ करें 2 इंच ड्रॉप कर रहा है, तो हो सकता है स्लग 1 इंच ड्रॉप करे। इसी तरह 100 यार्ड पे भी स्लग का ये फ़ायदा है। लेकिन इसी तरह हवा में भी, विंड में भी स्लग का फ़ायदा है। स्लग उतना ज़्यादा हिलता नहीं है हवा से जितना ज़्यादा के पैलेट हिलता है। आप देख लें, अगर हवा चल रही हो, आप बैडमिंटन खेलें तो आपकी शटल कहीं की कहीं निकल जाती है, बिल्कुल सीधा पाथ जो है वो रखती नहीं है। जबकि आप अगर उसी हवा में अगर पत्थर फेंकेंगे तो वो इधर उधर नहीं होता, उसके फिन्स ही नहीं है, तो वो हवा उसे डिस्टर्ब नहीं उतना करती। तो सिमिलर इफेक्ट यहाँ है कि जहाँ एक चीज़ का फ़ायदा है वहाँ एक चीज़ का नुकसान भी है। हाँ, अगर हम स्लग के साथ एक अच्छा कॉम्बिनेशन FPS का, बैरल इंटरनल प्रोफाइल का है, इसके स्लग के डाई का, ये सारा एक बेस्ट ट्यूनिंग अचीव कर लेते हैं, जिससे हम लॉन्ग रेंज अच्छी एक्यूरेसी अचीव कर लें, जो कि एक काफ़ी मुश्किल काम है, इतना आसान नहीं है। लेकिन अगर ये हम अचीव कर लेते हैं तो फिर ये एक बहुत सक्सेसफुल चीज़ बन जाती है। आमतौर पे स्लग से एक्यूरेसी हासिल करना थोड़ा मुश्किल होता है और पैलेट से ज़रा आसान होता है। तो ये पैलेट्स में और स्लग में थोड़ा सा फ़र्क था जो मैं यहाँ डिस्कस करना चाह रहा था और उसकी रीज़न्स डिस्कस करना चाह रहा था। तो उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव था। अच्छा, जैसे मैं कह रहा था कि पैलेट जो है ये डुअल स्टेबलाइजेशन पे काम करता है। फिन स्टेबलाइज भी है ये, और ये रोटेशन स्पिन स्टेबलाइज भी है। तो इसकी वजह से इसकी स्टेबलाइजेशन इनहेरेंटली ज़्यादा अच्छी है। आप अगर इसको कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में, यानी मुकम्मल इंडोर में 100 यार्ड्स पे यूज़ करेंगे पैलेट को अच्छा ट्यून करके, तो पैलेट्स आपको ज़्यादा टाइट ग्रुप दे सकते हैं एज़ कम्पेयर टू स्लग्स। स्लग बाज़ औक़ात हमारे हंटर्स ज़्यादा पसंद करते हैं। उसकी वजह यह है कि आउटडोर में वो यूज़ कर रहे होते हैं। आउटडोर में होता यह है कि क्योंकि स्लग की BC अच्छी है, उसकी वजह से स्लग विंड से उतना ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं हो रहा होता, जिसकी वजह से हंटर को थोड़ा सा बेनिफिट मिलता है और हंटर को लगता है कि स्लग ज़्यादा एक्यूरेट है। तो ये थोड़ी सी बात मैं आपको बतानी थी। और पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।